kind and happy. Today we will read this chapter first, the sentences. Okay. First of all, we discuss the sentence. Let us start now this chapter. You have already learned in the previous classes that a sentence is a group of words that one make complete sense. Okay. सेंटेंस तब कंप्लीट होता है जब उसका एक कंप्लीट सेंस होता है. ओके. ए सेंटेंस एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. यहाँ तक एक सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट थॉट रखता है. ओके. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैप्स में लिखा जाता है और उसकी एंडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होता है. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल, मीना ईट्स एन एप्पल. मीना क्या खाती है? एक सेब खाती है और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आई लाइक. आई क्या है? सेंटेंस का कैप्स में है. आई लाइक टू वॉक व्हेन द स्काई इज ब्लू. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और लास्ट में क्वेश्चन. नेक्स्ट, यू शुड गेट अप अर्ली. तुम्हें जल्दी उठना चाहिए. लास्ट फुल स्टॉप. एंड व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया. और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. दिस कॉल्ड द सेंटेंसेस. नेक्स्ट are phrase. A group of words which make sense but not complete sense. शब्दों का वह समूह जो अपने आप में क्या रखता है? सेंस रखता है. ठीक है. बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेकिन उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती. इट इज कॉल्ड अ फ्रेजेस. इट्स अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड वर्ड विदाउट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. ये जो फ्रेजेस होते हैं इनमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है. जिस सेंटेंस में ना वर्ब हो सब्जेक्ट हो उसी को हम फ्रेजेस कहते हैं. नेक्स्ट है, a phrase must make some sense also. Number 1 example, a phrase must make some sense also. For example, the sun rises in the east. In the east. Next, Humpty Dumpty sat on a wall. She wore a hat with blue trimming. The accident on the bridge was not serious. Okay. Next, the girl with the red hair is an artist. Okay. Next, the colored words in the east on a wall with blue trimming on the bridges and with red hair is called the phases. Okay. Remember, there must be a verb in a sentence, but there may or the mean be not be a verb in a phrase. फ्रेज में जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें ना वर्ब होती है ना सब्जेक्ट होता है और जब उसमें कोई चीज इंक्लूड नहीं होती दैट्स कॉल्ड द फ्रेजेस. ओके. नेक्स्ट है काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर फर्स्ट, assertive or the declarative sentences, interrogative sentences, imperative and the exclamatory sentences. Number first, we discuss the assertive sentences. Now, an informative sentence is that finishes with a period or a full stop. जो informative sentences होते हैं वो किस पे sentences पर खत्म होते हैं और वो sentences से शुरू होते हैं. मीन कैपिटल वर्ड से शुरू होते हैं और एंडिंग फुल स्टॉप पर जाकर हो जाते हैं. is referred to as the declarative or the assertive sentence. ऐसे सेंटेंस को हम assertive या फिर declarative sentences कहते हैं. For example, I enjoy reading fantasy book. मुझे बहुत अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है. तो लास्ट में लगाते हैं हम फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से क्या होगा? ये assertive sentences है. नेक्स्ट है an assertive or the declarative sentences says or the states something. ये जो assertive sentences होती हैं जो assertive sentences होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं. एग्जाम्पल है Tanzine was one of the 9 gems
in the court of Akbar. अकबर की 9 रत्नों में से जो तानसेन थे वो एक थे. Next, he was the born in the 506 at भारत in ग्वालियर. 1506 में उनका जन्म भारत की ग्वालियर में हुआ था. ओके. Next, and assertive sentences can be either affirmative or negative sentence. Assertive sentence को हम affirmative भी और negative sentences भी कहते हैं. Affirmative sentence वो होती है जिन्हें हम simple रूप से साधारण तरीके से यूज करते हैं, that's called affirmative, and negative used not. For example है Tanzin was a great classic singer. Tanzin कैसे थे? एक great classic singer थे. It's called a affirmative sentence. And the next one, as a child he did not. क्या use what? Did not want to the learn music. Okay, that's called यहाँ पर not का use हुआ है. It's called a negative sentence. Next one, interrogative sentence. And interrogative sentence is ask a questions and has a question mark at the conclusion. जो interrogative sentences में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिन सेंटेंसों को लिखने के बाद क्वेश्चन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, that's called the interrogative sentences. Example है what was the title of a movie you were reviewing of intent. यहाँ तक कि जैसे कि हमने क्या तुमने मूवी का टाइटल देखा था, है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया व्हाट. तो जहां पर क्वेश्चन वर्ड क्रिएट लग जाता है, दैट्स कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन, एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन. जैसे कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाउ डिड तानसेन बिकेम सच ए ग्रेट सिंगर. क्या वास्तव में तानसेन कितने बड़े सिंगर थे, मतलब कैसे सिंगर थे. तो हाउ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, that's called the interrogative sentence. And next one, did. क्या did he create any new recs? क्या उसने नई recs तैयार की है. तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन की स्थिति है, that's called the interrogative sentence. जिन क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है उनको हम फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव कहते हैं, और जहां पर क्वेश्चन वर्ड लगता है, क्वेश्चन वर्ड फॉर एग्जांपल हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी यस और नो क्वेश्चन. एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें केवल यस और नो में आंसर देना होता है, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव. ओके, एंड द व्हाई क्वेश्चन as there are no questions can be answered in the yes or no, and the why questions begins with the question words like when, who, why, etc. जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स से शुरुआत होती है, हाउ, व्हाट, वर, उनमें पूरा आंसर देना होता है, वो हमारे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड कहलाते, इंटरोगेटिव कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वर्ड यू एब्सेंट यस्टरडे. क्या तुम कल एब्सेंट थे, तो हमें आंसर देना होगा यस या नो में. नेक्स्ट है व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे. आप कल एब्सेंट क्यों थे, तो इसका हमें पूरी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड द सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या फिर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट imperative sentences are sentences that express a request, an order or a command is refers to as in the imperative sentence. imperative sentence में जब request, order, command आदि सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, उसी को हम imperative sentences कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है when you arrive. यदि तुम पहुंचोगे, जाओगे, प्लीज पिक अप द नोट. तो वहां जब क्या कर लेना, मेरा नोट मतलब नोट पिकअप कर लेना. ओके, एंड द इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस द कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. इंपेरेटिव सेंटेंस में किस चीज की इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. ओके, डाउनलोड सम इंफॉर्मेशन अबाउट तानसेन फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट से तानसेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन क्या करो, डाउनलोड करो. तो ये क्या हुआ, कमांड करना हुआ. नेक्स्ट, टेल मी समथिंग अबाउट रेक्स प्लीज. कृपया ये मुझे इंडेक्स के बारे में कुछ बताओ.
तो जहां पर प्लीज वर्ड जुड़ जाता है दैट्स कॉल्ड अ रिक्वेस्ट सेंटेंसेस. एंड नेक्स्ट, डेवलप सम टेस्टी फॉर क्लासिकल म्यूजिक. या कुछ म्यूजिक जो है, कुछ जो क्लासिकल म्यूजिक है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, मतलब चेंज किया जाए, तो दैट्स कॉल्ड अ एडवाइस. ओके. नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ends in an exclamation marks and is used to express quickly. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्सप्रेस क्विक होता है, मतलब अचानक से, सडनली, सडन होने वाली फीलिंग्स, इमोशंस, दैट्स कॉल्ड अ एक्सक्लेमेशन sentences. Okay. Power interjections can also be used to the create exclamatory sentences. यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज करके हमको क्या किया जाता है, एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट किया जाता है जिससे देखने के बाद एक आश्चर्यजनक चीजें हमारे सामने आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल है वाओ, दिस इज अ रियली गुड. वास्तव में ये अच्छा है, तो हमने किसी के लिए जोड़ा वाओ. वाओ अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो एक सडन फीलिंग हमारे सामने शो कर रहा है. दैट्स कॉल्ड अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके. नेक्स्ट वन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग. वो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सम फीलिंग्स होती है, सडन सम फीलिंग्स होती है. फॉर एग्जांपल, व्हाट ए ग्रेट सिंगर तानसेन वाज. अरे ये जो तानसेन था कितना महान सिंगर है, तो यहाँ पर हमारी कोई सडन फीलिंग क्रिएट हो रही है. ओके. नेक्स्ट, हाउ इज द ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज. कि हमारा भारत जो है वो भारत क्लासिक में, म्यूजिक में कितना ग्रेट है, कितना पावरफुल है. दैट्स कॉल्ड अ एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस. ओके. रिमेंबर, एंड adjective or imperative sentences end with a full stop. Next, an interrogative sentences end with a question mark. An exclamatory sentences ends with the exclamation mark. Okay. Affirmation and the negations. Okay. करते स्टार्ट. Declarative, interrogative and imperative sentences can be the affirmative, that's called positive, and the negative sentence look as these examples. Number first, don't. तो यहाँ पर आ गया not, so that's called a negative sentence. I do not. तो यहाँ पर not आ गया, that's called a negative sentences. Have you, have starting में जुड़ गया है ना. Have you booked your tickets? तो ये हो गया हमारा interrogative sentences. Next, are not you going to call your sister? ये हमारा इंटेरोगेटिव है, नॉट जुड़ा है तो नेगेटिव भी है. ओके. नेक्स्ट है प्लीज. प्लीज स्विच ऑन द लाइट. स्विच क्या कर दो, लाइट ऑन कर दो, प्लीज. तो प्लीज ऐड होती क्या हो गया, रिक्वेस्ट मीन इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट है द फ्लाइट हैज जस्ट अराइव्ड. फ्लाइट अभी पहुंचने वाली, तो दैट्स कॉल्ड अ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके. Next are kind of the interrogative sentences. We can broadly classify in the interrogative sentences into the following types. Number first, yes or no question. These accept the listener to answer is an affirmation or a negation. Example, do you like to play chess? क्या तुम्हें चेस खेल. डू यू लाइक टू प्ले चेस. क्या तुम्हें चेस खेलना पसंद है. तो चेस क्या होगा, डू से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. दैट्स कॉल्ड अ यस नो क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है डू यू गो टू स्कूल बाय ए कार. क्या तुम स्कूल कार से जाते हो. तो हमें क्या देना है, यस और नो में आंसर देना है. नेक्स्ट है डिड यू लॉक द डोर व्हेन यू लेफ्ट. जब तुम घर छोड़ो तो क्या करना, अपना दरवाजे को लॉक कर लेना. ओके. यस और नो, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो ओनली यस और नो पर डिपेंडेबल होते हैं. नंबर सेकंड है यस और नो क्वेश्चंस विद मॉडल ऑक्सिलरी. जो यस और नो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी पर डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्वेश्चन may begins with the model auxiliary to seek permissions or advice. model auxiliary में सबसे ज्यादा जो सेंटेंस होते हैं वो एडवाइस पर
रिक्वेस्ट पर, इंफॉर्मेशन पर, ऑर्डर पर डिपेंडेबल होती है। एग्जाम्पल है मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, है ना, या मैं छोड़ सकता हूँ अब, तो ये हो गया पैरेंलिज्म। ओके, नेक्स्ट है शुड शी गो टू द डॉक्टर, क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो ये हो गया एडवाइस। नेक्स्ट है कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, तो क्या तुमने पोस्ट ऑफिस में रास्ते में बताया, कि रास्ते में क्या तुमने बताया कि रास्ते में पड़ता है पोस्ट ऑफिस, दैट्स कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट मस्ट आई डू द होमवर्क लाइक नाउ, दैट्स अ क्वेश्चन नेसेसिटी। ओके, फर्स्ट है why questions, these accept the listeners to answer by providing details or specific information. Example, which is the shortest route to the central railway station, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसमें है सबसे पहले अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, these requires the listener to convey his or her choice of options when answering, जिसमें क्वेश्चन आंसर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर किस रूप में दें, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग्स, दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ओनली वर्ब और सब्जेक्ट से बने हुए, एडेड टू द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और उनके साथ में डिक्लेरेटिव मीन अफर्मेटिव सेंटेंस इंक्लूड होता है, एक कॉमा सेपरेट द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग, एक कॉमा के माध्यम से वो क्वेश्चन टैग को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। A speaker uses question tags when his or she wants from listener to confirm or the contract his or her statement. Okay, for example, she is leaving the job, so आंसर है is, not isn't she, वह नहीं कर रही है। नेक्स्ट you aren't going to the forgive him, आंसर है are you। ओके, for using question tags while speaking, the following rules are helpful. Number first, positive statement has negative question tags, positive statement को हम negative tag में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है we were aware of the decision, तो आंसर है we weren't we, कि हम नहीं कर सकते। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे इसका नेगेटिव, we were के साथ we weren't not। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव स्टेटमेंट हैज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। एग्जांपल we were not aware of the decision, तो हमको पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसका नॉट हटा देंगे, तो क्या करेंगे were we aware of the decision। ओके, the verb in the question tag, the verb in the question tag is the same as the verb in the declarative sentence। जो क्वेश्चन टैग होता है वो डिक्लेयर सेंटेंस पर डिपेंडेबल होता है, बिफोर इट या इससे पहले, बट देयर इज अ वन डिफरेंस, इफ द वर्ब इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इज पॉजिटिव, देन द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। ओके, यदि वर्ब में डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव होता है तो देन कॉमी के बाद दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होता है। ओके, if the verb in the declarative sentences is negative, then the verb in the question tag is positive। okay, next है rhetorical questions। rhetorical questions, these have the structure of a questions by the perform the functions of a declarative sentence। जब किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, rhetorical question कहते हैं। यूजिंग ए rhetorical question, the speaker makes a statement and does not accept any answer
फ्रॉम द लिसनर। इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पीकर जो है अपनी बात कहता तो है लेकिन सामने वाले की प्रॉपर वे में सुनता नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक मनी ग्रो ऑन ट्री? क्या तुमने सोचा है कि पेड़ पर पैसे लगते हैं, उगते हैं, है ना? नेक्स्ट है, डिड समवन टेल यू दैट लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस? क्या तुम जानती हो कि जो हमारा जीवन है वो फूलों की बेड की तरह है? नेक्स्ट, आर वी सच कवर्ड दैट यू वांट टू क्विट? यदि तुमको डर लगता है तो तुम बिल्कुल शांत हो सकते हो। ओके, isn't the organization supposed to change its rules for one employee? Okay, next है echo questions. There is a repetition by the listener of either a small part of the whole of the speaker's question. Example है, she is apostrophe s इसको लगाएंगे जिसको हम कहते हैं EQ questions. She is pathologist by profession. क्या वो पैथोलॉजिस्ट है प्रोफेशन से? नेक्स्ट है, she is what by profession? उसका क्या प्रोफेशन है? I heard Mr. Gupta is moving to Pune. मैंने सुना है कि मिस्टर गुप्ता पुणे जा रहे हैं. So that's answer. We are good. That answer is Pune. Okay. Declarative sentence as questions. This is common as a spoken form but is not used in formal written English. The speaker uses a declarative sentences, for example, subject plus verb, with a rising tone to ask the questions. It can be either affirmative or negative. For example, she hasn't left yet. Next, I can open the window. You didn't wash the letter. And you want something to eat. Okay. Next, use of imperative sentences. Number first is suggestion, advice, or warning. For example, don't take a hasty decision. Number next, watch out, the floor is wet. देखकर चलो क्योंकि फर्श गीला है. Carry an umbrella when you go out. अपने साथ umbrella लेकर चलो जब तुम बाहर जाओ. ओके, तो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस क्या है? सजेशन है, सुझाव, एडवाइस है या फिर वार्निंग है. ओके, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट. प्लीज ask Pooja to come and sing. Number next, kindly give me a few days to go through the document. Next है command और instruction. Command और instruction दिया जाता है. Don't open fire till you are told to do so. Next, heat it for 2 minutes in the microwave. Invitations है, let's do our work, have some more coffee, let me know if you have any problems. Okay, permission और the prohibitions है, come in, permissions, don't take photography here, that's the prohibition. Okay, imperative sentences generally have two characteristics. Number first, the subject you is understood or implied. It is not mentioned. मतलब imperative sentence में जो subject होता है you, वो छिपा हुआ होता है, मतलब वो सामने नहीं दिखाया जाता. Next है, the verb is in the base form. It is doesn't show tense. यहाँ तक कि tense में सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता बल्कि वर्ब से इसकी शुरुआत की जाती है. Okay, there may be the situations, however, when the subject you is mentioned, imagine two little children quarreling with each others. Okay, जैसे be quiet. Be quiet के बाद क्या है? Question mark. Next, you be quiet. क्योंकि you क्या है? छुपा हुआ है ना? तो you को हमने छुपा दिया तो हम क्या बोलेंगे? You be quiet. तुम चुप रहो. Next है don't talk to me.
बातें मत करो, किससे? यू डोंट टॉक टू मी, तुम मुझसे बातें मत करो। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। द फॉलोइंग आर द टू कॉमन वेज in which exclamatory sentences are constructed. Okay, using what with a noun. For example, what a victory, what an expensive, and what is a beautiful sunset. कितना सुंदर विजय है और हमारी कितना कितना अच्छा अनुभव है और कितना सुंदर सूर्य छिपता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये कहना है तो हम इसमें एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स ऑल द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यूजिंग हाउ का यूज कैसे करेंगे? हाउ एब्जॉर्ब ऑल द साउंड्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ रूडली शी स्पीक्स, तुम कितना रूडली ऐसे कैसे बोल सकते हो? एंड हाउ केयरलेस यू आर, और तुम कितनी केयरलेस हो सकते हो। ओके, एक्सक्लेमेटरी और द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। The position of the subject and the verbs are the different in an exclamatory and an interrogative sentences. Example है number first, what is that strange thing? ये क्योंकि what पहले है तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी कैसे? what is strange things this that is और लास्ट में exclamation mark, that's called a exclamatory sentences. Next, how fast is the car? Question mark, interrogative. How fast is the car is और last में exclamation mark, that's called the exclamatory sentences. In exclamatory sentences, the verb comes after the subject. जो exclamatory sentences होते हैं उनमें जो verb होती है वो subject से पहले आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप टू सॉल्व जम्बल्ड सेंटेंस इफेक्टिवली। नंबर फर्स्ट, begins with identifying the subject. जब हम किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को, बिकॉज क्योंकि विदाउट दीज देयर थिंग्स आर सेंटेंस कुड नॉट बी मेड, क्योंकि बिना सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए हमें इनको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। नंबर सेकंड है देन गो फॉर कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और पंक्चुएशन हमेशा ध्यान में रखी होनी चाहिए। दिस विल बी हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस क्रिएट करने में उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। स्टार्टिंग दैट्स द बिगिन ऑफ अ कैपिटल लेटर्स and the ending of the full stop, question mark and the exclamation marks. Okay, next, look for the conjunction because they help to connect parts of the sentence. जब हमें दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना होता है तो हम उसको कंजंक्शन के द्वारा उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट, after locating all these terms, try to arrange words to make a meaningful sentence. जब हम किसी सेंटेंस को बहुत तरीके से मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एक प्रॉपर वे में लिखते हैं और सेंसफुल लिखते हैं, जिससे एक बार पढ़ते हुए क्लियरली उसकी जो मीनिंग होती है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू एडजस्ट योर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रामेटिकली जो ऑर्डर होते हैं उनको तरीके से लगाना होता है, तभी हमारा सेंटेंस सही से बन पाता है। एंड आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स, जैसे कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यू विल बी रेडी विद योर करेक्ट सेंटेंस, तभी हम इन सेंटेंस को करेक्टली बना पाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल है जैसे ब्रेन, हमने वर्ड्स ले लिए, ब्रेन, दिस इज द इनसाइड सिचुएशन, स्कूल, द। अब इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे कैसे? द ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द स्कूल। जो हमारा ब्रेन है वो किसके इनसाइड होता है? स्कूल के। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज, एयर मेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर इज इंडस्ट्रियल, द, इन को करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर एयर पोल्यूशन इन ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट, फॉर द ग्रोथ ऑन रेन फार्मर्स डिपेंड ऑन क्रॉप्स।
सही ऑर्डर में लिखेंगे. The farmer depends on the rain for the growth of crops. Okay. Next is the dog happily tail wagging ran the park in. Correct करते हैं. The dog ran happily in the park with its tail wagging. Okay. Next, the rain in got we drenched. Correct order है. We got drenched in the rain. Okay. Okay. Then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.